Hello students, welcome to Super 20 Institute. So in today's class we are going to do some NCERT example problems. So we have already discussed some of the example MCQs. So see the question. The question is colligative properties depend on the first option will be the nature of the solute particles, nature of the solute particles dissolved in solution. Okay, the B option will be the number of solute particles in solution. Right. The next option will be the physical properties. The physical properties. Okay, the physical properties of the solute particle dissolved in solution of the solute dissolved in solution. Okay. The last option will be the nature of solvent particles. Okay. So देखो we have discussed about colligative properties. So colligative properties क्या थी? The properties that are depend upon the quantity of solute. Okay, the number of solute particles. तो यहाँ से आपका right option will be the number of solute particles in a solution. तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था नोट में that the nature of the solute particle dissolved in solution does not affect the colligative property. तो नेचर पे डिपेंड कभी नहीं करती. ये ऑप्शन आपका इंकरेक्ट हो जाएगा. And what are physical properties? Physical properties are their appearance, their odor, means कि smell कैसी है, how we are feel when we touch them. ओके, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं. तो ये भी इसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के नेचर पे भी नहीं डिपेंड करना. Colligative properties will only depend upon the nature of solute particles. So your right option will be option number B. Okay. So write it down. And your next question will be the unit of Ebullioscopic constant. Okay, constant is, so what is your Ebullioscopic constant? We have studied about elevation in the boiling point. So वहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? डेल्टा TB will be equals to KB into molality. So this constant is called molar elevation constant. Molar elevation constant, and also this constant is called Ebullioscopic constant. So add it in your notes. अपने notes में ये add कर लो कि KB को ही हम Ebullioscopic constant बोलते हैं. Fine. So options given are, option number A is Kelvin, kg per mole, or we can simply write it as Kelvin molarity inverse. Okay. The B option will be mole, kg, Kelvin inverse or Kelvin inverse. I am writing molarity as mole m. Okay. C, kg
Fine. And option number D is Kelvin, mole, kg inverse, or Kelvin molarity. Okay. So how to find the unit of this kb? तो हमें किसी भी चीज की अगर यूनिट फाइंड करनी होती है, we have also learned it in the physics classes, but हमें कभी भी किसी चीज की यूनिट फाइंड करनी है, so how to find? फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी यूनिट फाइंड करनी है उसको एक साइड में सेपरेट कर लो एंड अदर ऑप्शंस को एक साइड में कर लो, डेल्टा टीवी अपॉन एम. So what is the unit of temperature? The unit of temperature will be Kelvin. And what is the unit of molality? तो यहाँ पर आप मोलालिटी को ऐसे ही लिख सकते हो कि यहाँ पे आपकी यूनिट होगी केल्विन मोल इनवर्स. अब यहाँ पे इस यूनिट को यहाँ मैच करके देखो कि आपका कौन सा जो ऑप्शन है दैट विल बी मैचिंग आउट. तो मोलालिटी का हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन द वेट ऑफ द सॉल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या आता था हमारा वेट. तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या बन गई? मोल अपॉन वेट किसमें था? केजीज में. तो मोल kg इनवर्स. यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन इनटू मोल पर kg. फाइन. तो ये कौन सी यूनिट है? केल्विन. See the options here. मोलालिटी इनवर्स. तो कहाँ पे मोलालिटी इनवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है? Check it down. So देखो यहाँ पे क्या था हमारा, ये हमारी मोलालिटी की वैल्यू आई. ओके. अब हमें इस वैल्यू को पुट करना यहाँ पे डेल्टा दैट इज केबी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी. तो यहाँ पे टीबी की वैल्यू क्या थी हमारी? केल्विन की. एंड मोलालिटी की हमने क्या कैलकुलेट की? मोल अपॉन पर केजी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? केल्विन मोल इनटू केजी, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? केल्विन केजी मोल इनवर्स. और दूसरी यूनिट क्या आती है हमारी मोलालिटी वाली? केल्विन मोल इनवर्स. तो ये कौन सा आंसर है? दिस इज योर आंसर नंबर 8. ओके. सो ए विल बी योर राइट आंसर. सो नोट इट डाउन. So see the next question. So our next question is about when we have more than one correct answer. जब हमारे पास एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स होंगे. ओके. So write down the question. The question is relative lowering of vapor pressure is a colligative property by is a colligative property because the options given are, the first option is it depends on the concentration of non-electrolyte solute in solution
does not depend upon the nature of solute molecule. The nature of solute molecule. The option number B is if same यही लिखोगे आप it depends on the number of particles. It depends on the number of particles. Okay, it depends on the number of particles of electrolyte. पहले क्या था फर्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आपको गिवन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पार्टिकल्स and does not depend upon the depend on the nature of solute particles. Okay, so these are the options given. आपके दो ऑप्शन हो रहा है वो भी सेम है. So here आपको दो ऑप्शंस दिए हैं एंड जो सी ऑप्शन है दैट इज योर सी ऑप्शन इज सेम. वहां पे आपको गिवन है इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन द सॉल्यूशन एज वेल एज द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. तो यहाँ पे हमारे जो ए एंड बी ऑप्शन है दैट बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. ए एंड बी आर करेक्ट. लेट मी एक्सप्लेन यू दीज options. So first option में given है it depends on the concentration of the non-electrolyte solute in the solution and does not depend upon the nature of solute molecules. Okay. तो relative lowering के लिए जो हमारे पास relative lowering is a colligative property because it depends upon the concentration of non-electrolyte solute. Okay, in the solution and does not depend upon the nature. तो आपका ये A ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा एंड आपका B ऑप्शन भी जो होगा that will also correct. So note it down and see next question. Okay, the next question is the value of bond form factor will be given as so what is the formula for bond form factor? The options given are the number A option will be we represent bond form factor with I normal molar mass upon abnormal molar mass. The B option will be abnormal molar mass upon normal molar mass. Okay. The C option will be I will be equals to observed colligative property upon calculated colligative properties. So option number D is calculated colligative properties upon observed colligative properties. Okay. So मैंने आपको क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तब आपको बताया था द फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑफ फैक्टर विल बी I will be equals to क्या था फॉर्मूला नॉर्मल observed
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन calculated colligative property. Okay, this I have told you in the theory section. And यहाँ पे एक और फॉर्मूला वो भी नोटेड डाउन कर लो. यहाँ पे लिखो और another formula will be I will be equals to normal molar mass upon abnormal molar mass. Okay. So यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो राइट आंसर विल बी ए एंड सी. सो नोटेड डाउन. The next question will be which of the following binary mixtures which of the following binary mixtures will have same composition. Okay, composition in liquid phase and vapor phase. The options given are benzene toluene, benzene toluene. Option number B is water, nitric acid. Okay. C option will be water, ethanol, and your D option will be N-hexane and heptane. Okay, so write it down. So, which of the following binary mixture will have same composition in liquid and vapor phase? Then the composition is same in liquid and vapor phase. These types of liquids are called azeotrophs. They are constant boiling mixture. Constant boiling mixture, and they are called azeotrophs. And they also have fixed composition. राइट, यही पढ़ा था ना हमने एजियोट्रोप्स में. सो यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है एजियोट्रोप्स के बेंजीन एंड टोलुएन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड इथेनॉल एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन. तो मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशंस के केस में एग्जांपल लिखवाए थे बेंजीन एंड टोलुएन. These are the examples of ideal solution. एक और कौन सा एग्जाम्पल था? N-hexane. I have told you to learn these examples. N-hexane and N-heptane. Okay, so these are the example of ideal solution. But azeotropic mixture जो होते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव बॉइलिंग मिक्सचर एक होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर होता है, कि हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर होता है. ओके, एंड ये डेविएशंस वाले मिक्सचर्स को हम बोलते हैं क्या? azeotrophs. तो these are the examples of non-ideal solutions. तो water and nitric acid and here water and ethanol are the examples of non-ideal solution. That means they will form azeotrophs. Okay. So this is the formula for water and this is nitric acid. And यहाँ पे आपको ethanol का formula
option will be B and option number C. Okay, so write down this question. These are the example of non-ideal solution. Non-ideal solution. Okay, so note it down. Comes to next question. The next question will be question is for a binary for a binary ideal liquid solution, the variation in total vapor pressure versus composition of solution is given by which of the curve? Okay, so the question is asking about for a binary ideal liquid solution, the variation in total vapor pressure versus composition of solution is given by. So we have already studied about this graph. हमने ideal solution के लिए graph बनाया था, that is between the vapor pressure and the mole fraction. ये था ना हमारा ग्राफ. So what we have studied here, जो हमारे मोल्स लो के अकॉर्डिंग था ये ग्राफ, that P will be equals to P naught into x. So this is the equation of straight line. Okay, where c is equals to 0, intercept will be 0. This is the value of m. Okay, so x axis पे तो हम प्लॉट करेंगे chi, that is mole fraction, and जो हमारा y axis होगा वहाँ पे हम प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर का ग्राफ. एंड जो हमारा ग्राफ आता था that will be of straight line. ये था ना हमारा ग्राफ. Okay, now see the options that are given. The options given are we have 4 options. That is P, and the fourth option is here. Okay, I am plotting here. P, so what are the right options here? This is option number A, this is option number B, this is C, and this is D. So first of all, we all know that the graph is of straight line. तो यहाँ पे straight line वाले graph कौन से हैं? A and B. Okay, and ये जो B graph है that is curved form. तो ये graph जो होगा wrong option होगा. C will also the wrong option. हमारे पास straight line वाला graph कौन सा है? A. तो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा वेपर प्रेशर है that may be increase or may be decrease. तो ये this graph is showing increase, okay, and this graph is showing decrease. So both are correct options. Okay, so the answer will be A and D. Both A and D both are correct. Okay, so write it down.
property are observed when A is equals to non-volatile solute. Non-volatile solute is dissolved. Non-volatile solute is dissolved in volatile liquid. In volatile liquid. Okay. So what are volatiles? The substances that are foam vapors, and what are non-volatiles? The substances that does not form vapor. Okay. B option is a non-volatile liquid. Once again, a non-volatile solid. Okay, here is non-volatile solid. A non-volatile liquid is dissolved in volatile liquid. Okay. The C option will be a gas. A gas is dissolved in non-volatile. Okay. Non-volatile liquid. The D option will be a volatile liquid. A volatile liquid is dissolved in another volatile liquid. Okay. So these are the four options. So a non-volatile solid. Question is colligative properties are observed when a non-volatile solid is dissolved in volatile liquid. Okay. तो हमने colligative properties किसमें पढ़ा था? Solutions में पढ़ रहे थे ना हम. तो यहाँ पे गैस वाला ऑप्शन तो क्या आ जाएगा? Incorrect, because we are studying about solutions. And a volatile liquid is dissolved in another volatile liquid. तो हमने क्या केस पढ़ा था? Non-volatile solid is dissolved in volatile liquid. And हमने another केस पढ़ा था non-volatile liquid dissolved in volatile liquid. तो ये वाला केस तो हमने स्टडी भी नहीं किया. ये ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट. हमने कौन कौन से केस पढ़े थे? हमने पढ़ा था non-volatile solute. Okay, non-volatile solid in liquid. और दूसरा हमने पढ़ा था liquid solution वाला. Liquid in liquid solution. Okay, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? A non-volatile solid is dissolved in volatile liquid, and another option is a non-volatile liquid is dissolved in volatile liquid. Okay, so both are correct options. So the answer will be A and B. Okay. So write it down. So in this class we have discussed a lot of the NCERT example problems that are in the form of MCQs. These questions are very important for competitive point of view and as well as for board examinations. तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बार-बार रिवाइज करने हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो सके. ओके. Students, this is all about today's class. In our next class we are going to discuss some short type of questions. तो हम अगली क्लास में अपनी short answer type question करेंगे. Short answer type questions. तो ये जो आपके questions होंगे that are from your NCERT books, extra questions जिन्हें हम कह सकते हैं, ये चैप्टर के बीच में short questions जो होंगे हम उनको cover करेंगे in our next class. Okay. So this is all for today's class. Thank you.